आज की क्लास में भी हम पेपर 5 को डिस्कस करेंगे, मई जून 2022 का। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पेपर 5। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। ये सारी इसकी वर्किंग है। अगर आपने इसका लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पहले 3 क्वेश्चंस को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। Okay, now today we will discuss question number 4. Now, question number 4 is Jacob has 4 coins. One of the coin is biased. This is an important point, that one of the coin is biased such that when it is thrown, the probability of obtaining a head is 7/10. The other 3 coins are fair. So 4 coins हैं, एक biased है और 3 fair है. The Jacob throws all 4 coins once, and the number of heads that he obtained is denoted by the random variable is x. So x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? The number of heads को. The number of heads को ये रिप्रेजेंट. The probability distribution table is as follow. Okay, show that a is 1/5 and find the values of b and c. Okay, now it means that first of all we have to find that what is the probability of one head. Probability of one head. अब probability of one head के लिए सबसे पहले तो हम केसेस लिखे हैं कि one head किस तरह हो सकते हैं. one head, तो एक हेड की पॉसिबल आउटकम हम लिखें अगर, तो ये हो सकता है कि हेड जो बाइस्ड कॉइन है उसको हम फर्स्ट पे रख लें. सो हेड, टेल, टेल, तीनों टेल्स आ गए. या ये हो सकता है कि बाइस्ड कॉइन पे टेल हो और रिमेनिंग्स आपके पास हेड, टेल, टेल हो, या टेल, टेल, हेड, टेल, और टेल, 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 हेड. तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं वन हेड की. इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट कॉइन है, फर्स्ट कॉइन को हम जो है बाइस्ड कंसिडर कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो 3 कॉइन्स हैं इनको हम फेयर कंसिडर कर रहे हैं. तो बाइस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी, बाइस्ड के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? दैट इज 1/2 और 7/10. और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है? दैट विल बी 3/10. सिमिलरली फेयर कॉइन की केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है आपके पास? दैट विल बी 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है आपके पास? दैट विल बी 1/2. नाउ फर्स्ट केस देखें. फर्स्ट ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड. सो वन हेड के केस में क्या होगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, टेल, टेल, plus probability of tail, head, tail, tail, then probability of tail, tail, head, tail, and then last probability of tail, tail, tail and head. So first केस में देखें तो अब हेड आ रहा है आपके पास. हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है बाइस्ड के लिए? 7/10. और रिमेनिंग आपके पास क्या है? 3 आपके पास टेल्स हैं और फेयर कॉइन्स हैं. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. प्लस सेकेंड केस में देखें तो आपके पास अगेन बाइस्ड कॉइन पे टेल आ रहा है. सो दैट विल बी 3/10 इनटू रिमेनिंग फेयर कॉइन्स हैं और तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. सिमिलरली फॉर द थर्ड केस, बाइस्ड पे 3/10 इनटू तीनों पे आपके पास टेल आ रहा है. सो दिस विल बी 1/2 क्यूब. देन बाइस्ड पे अगेन 3/10 into 1/2 होल क्यूब. सो आखिरी 3 केसेस तो सेम है. सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 7/10 into 1/2 होल क्यूब प्लस 3 into 3/10 into 1/2 होल क्यूब. तो आखिरी तीनों केसेस में ये सेम था, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट that 7/10
10, bracket close, then the bracket again, 1 by 2, 1 by 2 whole square, 1 by 2, sorry, this should be whole cube, so whole cube plus 3 into 3 by 10 into 1 by 2 whole cube. Now the answer will be, final answer will be 1 by 5. So we can see that probability of x is equals to 1 is equals to a is equals to 1 by 5. So hence proved. तो यही था हमारे पास, a आपके पास था कि a अब आपके पास क्या है 1 by 5. अब b के लिए देखें, so b means कि दो आपके पास हेड हो. सो दो हेड्स कब आ सकते हैं आपके पास. सो इसके लिए हम पहले तो पॉसिबल आउटकम्स देख लें. सो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास फॉर टू हेड्स, सो दो हेड्स के लिए आपके पास क्या हो सकती है पॉसिबल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ head, tail, plus probability of head, tail, head, plus probability of head, tail, ये हो गया probability of head, tail, plus probability of tail head, probability of tail head, या probability of tail head, plus 1 2 3 4 5. So probability of head, tail, probability of head, tail, ये head, tail. And then the third one is probability of head, tail, head, probability of tail head. Okay, now probability of tail head, tail. So इसको अब अगर हम फाइंड करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये देखें अगेन probability of head, tail, so which means that probability of, so this will be 7 by 10, ये बाइस्ड कॉइन था, into 1 by 2 होल क्यूब. अब देखें ये तीन केसेस में आपके पास हेड आ रहा है, हेड, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें इसको, प्लस टेल फर्स्ट में आ रहा है, तो 3 by 10 into 1 by 2 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3. अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो आपके पास ये क्या हो जाएगा 7 by 10 multiply by 1 by 2 whole cube multiply by 3 plus, so this will be 3 by 10 multiply by 1 by 2 whole cube multiply by 3. So this will be equals to 3 by 8. So
3 by 8 means, so this will be probability of x is equals to 2 is equals to b is equals to 3 by 8. So 3 by 8 means that b will be equals to 3 by 8. Now c will be equals to 1 minus, बाकी सारी probabilities को ऐड कर लें, 80 plus 1 by 5 plus 3 by 8, because sum of all the probability 1 होती है, so यहाँ से हम c की वैल्यूज लिख सकते हैं. So 3 by 8 plus 1 divided by 5 plus 3 divided by 80. So 1 minus answer. Now this will be equals to 31 by okay, we missed the last one, that was 7 by 80. So we have to add it to plus 7 by 80. So इसको भी हमने माइनस करना है. So minus 7 divided by 80. So this will be equals to 3 by 10. So c will be equals to 3 by 10. This will be the final answer. I hope that the concept is clear. Now in the second part, find the expected value of x. So expected value of x will be equals to summation of x dot probability of x. So इस केस में we can see that x आपके पास क्या था फर्स्ट केस में, दिस इज 0 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 80 प्लस, तो ये आपके पास x है, ये आपके पास x है और ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है. 0 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 80, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, so 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 by 8 plus 3 multiply by 3 by 10 plus 4 multiply by 7 by 80. Now we can see if we simplify it, so this will be equals to the first one तो 0 हो गया, 0 plus 1 by 5 plus 3 by 4 plus 9 by 10 plus 4 1s are 4 20s are plus 7 by 20. So expected value of x will be equals to 1 divided by 5 plus 3 divided by 4, 3 divided by 4 plus 9 divided by 10 plus 7 divided by 20. Now this will be equals to this will be equals to 2.2. Yes, so expected value will be equals to 2.2. This will be the final answer. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the next part. Jacob throws all 4 coins together. Find the probability that he obtained exactly one head. Now this is a very important point, that exactly one head on fewer than the occasion. So पहली चीज तो ये है कि exactly one head means what? Exactly one head means that we have to find probability of
x इज इक्वल्स टू 1 इज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखा हमने, दैट इज 1/5. Exactly one had on fewer than 3 occasions. So हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है. So binomial distribution such that x is the random variable. So binomial distribution 10 times अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं. So 10, 1/5 मीन्स कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. सो एक चीज़ याद रखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आपका एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होगा देन यू विल यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. रिपीट बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे. और इसमें आपके पास अगर वो फर्स्ट हेड पे होगा, अगर यहाँ होता है कि फर्स्ट हेड तो फिर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते. बट यहाँ पे है कि एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी 1/5. सो ये आपका सक्सेस है और ये आपके नंबर ऑफ n है. सो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं n और p. तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन है. n मीन्स के नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीट एक्सपेरिमेंट, और p आपके पास क्या है कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो है. नाउ हियर इन दिस केस वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 मीन्स that probability of x is equals to 0, 1, 0, 1, 2. इन तीनों की probabilities को हमने ऐड करना है. So probability of x is equals to 0 plus probability of x is equals to 1 plus probability of x is equals to 2. इन तीनों की probabilities को हमने ऐड करना है. So we can see that 10C0 into success की probability power n 0 into n minus r. So that will be failure की probability. This will be n minus r means 10 minus 0 plus 10C1 1/5 again success की probability 1, and then 4/5 10 minus 1 plus 10C2 1/5 2 and 4/5 10 minus 2 is 8. Okay, now from here we can see that 10C0 multiply by 1 by by the way इसका आंसर तो आपके पास 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट जस्ट टू मल्टीप्लाई बाय 4 divided by 5 whole power 10. This will be equals to 0.107 374 प्लस सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि जस्ट इसी क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूज को चेंज करते हैं. नाउ दिस विल बी 9, नाउ दिस विल बी 1, नाउ अगेन दिस विल बी 1. सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 0.2684 0.268435 प्लस अगेन हम इसकी वैल्यूज को चेंज करें. So this will be 8, this will be 2, and this will be 2 again. So the answer will be 0.301
0.1789. So we have to add it. So plus 0.268435 plus 0.107374. ज़्यादा वैल्यू इसलिए दें ताकि एक्यूरेट आंसर आए. तो 0.678. So this will be equals to x is less than 3 will be equals to 0.678. 0.678. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next one. Now here we can see find a probability that Jacob obtain exactly one head. जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि exactly one head means कि अब आपने geometric progression को यूज़ करना है. For the first time on 7th or 8th time that he throws the coin. Now अब हमें ये पता चल गया कि geometric progression है. geometric progression में को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं. लेट्स सपोज हम वेरिएबल y से रिप्रेजेंट करें. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप हमेशा यहाँ p रखते हैं एंड दिस विल बी इक्वल्स टू p q पावर r माइनस 1. सो नाउ फॉर दिस केस वी हैव टू फाइंड y इज इक्वल्स टू 7 और 8. 7 और 8. सो इसका हम फाइंड कैसे करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 8. सो 7 के लिए हम फॉर्मूला यही यूज़ करें. सो दिस विल बी 1/5. ये p है आपके पास. 4/5 ये q है आपके पास. r माइनस 1 मीन्स 7 माइनस 1 प्लस सेकेंड केस के लिए देखें. तो 1/5 अगेन और 4/5 पावर 8 माइनस 1. ओके. अब इसको डायरेक्टली हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y और 7 और 8 इज इक्वल्स टू. अब हम पहले फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर लेते हैं. सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5. So this will be whole power 6 plus 1 divided by 5 into 4 divided by 5 whole power 7. Now this will be equals to 0.0944. So 0.0944. So this will be the final answer. This will be the final answer. I hope that the concept is clear. फिर भी कोई confusion हो तो you can ask it in the comment section. Now let's move on to the next question. Question number 5. The length in centimeters of leaves of a particular type are modeled by the distribution this. Now n means that this is normal distribution और हमें normal distribution का format पता है कि when the random variable x is normally distributed then we have to write it like this: mu into
sigma square. So this mu will be, the first value will be called, the first value will be called the mean. Mu is mean. Okay, now it means that the value of mu is 5.2 and the value of sigma is 1.5. Okay, fine. Now find the probability that a randomly chosen leaf of this type has length less than 6 centimeters. So the question is that the random variable x is normally distributed such that mu is 5.2 and sigma is 1.5. So as we know, we have to find the probability. So probability of x less than 6 will be equals to, now first of all what we have to do, we have to convert this x into the variable z, and we know the formula for the z is equals to x minus mu divided by sigma. So we have to replace this x, if we want to replace it with z. So z is less than, now the value of x is 6 minus mu is 5.2 divided by 1.5. Now let's calculate this one. So this is 6 minus 5.2 divided by 1.5. So this will be equals to 0.533. So we have to find out probability of z less than 0.533. अब हमें ये पता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हमेशा हमें वैल्यूज़ बता रहा होता है, कौन सी, z की वैल्यूज़ बता रहा होता है, और z की वैल्यूज़ भी लेफ़्ट साइड की बता रहा होता है. सो इट मीन्स दैट कि अब हमने फाइंड क्या करना है. नाउ वी विल यूज़ द टेबल. अब टेबल को यूज़ करें. सो वी कैन सी दैट द वैल्यू इज 0.533. लेट्स राइट इट ओवर हियर. द वैल्यू इज 0.533. So 0.5 means at this point 5.3. So 0.7019. Let me write it over here. So probability of z less than 0.533 will be equals to 0.7019 plus, now we have to, as we can see we have another 3. तो अब तक हमने कितना पोर्शन किया है, 0.53 तक हम कर चुके हैं. Now we will attempt the next one, that is 3. So in the same row we have to see कि 3 के नीचे रो कॉलम में क्या है, that is 10. So 10 means this will be 0.20 लगा के 10. So if we add it, so this will be equals to 0.7029. So now we have to round it off up to probability को हमने हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, और z की वैल्यूज़ को हमने 3 डेसिमल प्लेस तक किया, प्रोबेबिलिटी को भी 3 डेसिमल प्लेस तक करेंगे. सो z इज लेस देन 0.533, sorry this will be 3, is equals to 0.703. Now this will be the final answer. I hope that the concept is clear. This will be the final answer. Again, now let's move on to the next question. But before that, let's remove this portion. Okay. Now
the length of the leaves of another type are also modeled by the normal distribution. मोस्टली ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आपको मेंशन ही होगा, और अगर कभी मेंशन ना हो तो आपने ख़ुद ये देखना है कि हम यहाँ पे बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। बट आपको हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन होगा, अप्रोक्सीमेशन के केस में मेंशन नहीं होगा। वो अगर अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। नाउ a scientist measures the length of a random sample of 500 leaves. So 500 leaves total number of this type, and finds that 46 are less than 3 centimeter long and 95 are more than 8 centimeters long. Now what does this statement means? This statement means लेस देन 3 सेंटीमीटर कितनी है, कितने हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आउट ऑफ 500 46 आपके पास लेस देन, सो प्रोबेबिलिटी आप इस तरह निकाल लेंगे लेस देन की, एंड प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 8 आपके पास कितने हैं, दैट इज 95 डिवाइडेड बाय 500। सो इसको हम डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the first one is 46 divided by 500, 46 divided by 500, so this will be equals to 0.092. The next one is 95 divided by 500, that will be equals to 0.19। सो ये दो प्रोबेबिलिटीज तो हमें पता चली गई। नाउ सेपरेटली अब हम इसको वी कैन राइट इट एज, हमें ये तो पता चल गया, दोनों को हम सेपरेटली 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than 3 is equals to 0.092, और अगर हम इसको z में कन्वर्ट करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 3 माइनस म्यू की वैल्यू क्या थी आपके पास 5 पॉइंट फाइंड एस्टिमेट। ओके, नाउ दिस केस, इस केस के लिए हमारे पास म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसमें म्यू को हम म्यू ही रहने देते हैं, बिकॉज हमने वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीव्स ऑफ दिस टाइप। सो दिस विल बी म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यही फॉर्मूला है 0.092। सेकेंड केस में अगर आप देखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 8 इज इक्वल्स टू 0.19, so this will be probability of z greater than 8 minus mu divided by sigma is equals to 0.19। now we can write it as, ये greater का symbol है, so we can write it as, बल्कि पहले हम इसको convert z से ही कर लेते हैं। so we can write it as, let's remove this one, अब हमें ये पता है कि अगर ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 8 को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो हमें सिर्फ लेस देन की प्रोबेबिलिटी बताता है, सो लेस देन 8 के साथ आप माइनस कर दें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.19, ये है हमारे पास गिवन है। so we can write it as, further we can write it as इसको अगर हम रीअरेंज करें, so this will be equals to probability of x less than 8 will be equals to 1 minus probability of the x greater than 8, so this will be
0.19. So probability of x less than 8 will be equals to 1 minus answer, so this will be equal to 0.81. ओके, अब हमारे पास दोनों केसेस हैं। अब हम इसको अपने z में कन्वर्ट करेंगे। ओके, z में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई डायग्राम से, अपनी इन प्रोबेबिलिटीज से, कि थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं है, तो इसको ज़रा रीड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये आपके पास है, एंड दिस इज द पॉइंट, लेट्स सपोज 8, एंड दिस इज द पॉइंट, लेट्स सपोज 3। सो लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.092, और ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी है 0.19। ओके फाइन, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर। नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो इस फर्स्ट केस, इसी को अगर हम देख लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x को z में कन्वर्ट करना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 8 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय sigma is equals to that will be okay। अब इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, इसके लिए हमें x की वैल्यू देखनी है कि आप 0.81 पे आपके पास क्या है, तो टेबल पे आ जाए। सो टेबल पे अगेन देखें, तो 0.81 आपके पास कहाँ पे बन रहा है, सो इस कॉलम में देखें 0.81, सो 0.81 आपके पास यस। तो ये इन दो पे देखें, अगर यहाँ पे अब हमने रिवर्स वैल्यूज पे जाना है, तो अब देखें यहाँ पे 0.87 एंड 0.87 एंड 8, बिकॉज आप यहाँ पे इसको देखें तो इन वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें 0.88078 प्लस 0.0022, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.81, ये आंसर बनता है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज रिक्वायर्ड वैल्यूज बन रही हैं वो 0.08 0.0878 ये बन रही हैं। सो विच मीन्स दैट 8 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.878। सो रीअरेंज करें अगर इसको, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.878 sigma plus mu is equals to 8. So this will be equation 1. Same goes for the second one, for the first one आपके पास क्या था, less than 3 minus this। now ये जो फर्स्ट केस था आपके पास, this one, ओके, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे आपके पास मीन वैल्यू होती है म्यू, और अगर आप ये देखें तो ये आपकी नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइड पे हो, इट मीन्स दैट मेक श्योर दिस इज नेगेटिव, this is negative because
इन फिगर, ये ऊपर जो आपके पास फिगर हमने बनाई है, इन फिगर लेट्स सपोज इट्स फिगर ए. In figure A, 3 was on the left side. 3 was on the left side. So 3 was on the left side. So this will be equals to, अब हम अगर इसको लिखें, so this will be equals to, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन थी, दैट वाज 0.092, 0.092, यस. तो 0.092 कहाँ पे बन रहा है, इसको हमने नेगेटिव के साथ लिखना है. 0.092, लेट मी हाईलाइट द इशू, द पॉइंट, 0.092. so these two and then yes, इसमें अगर हम ऐड करें so 1.329, so this will be equals to 1.329. so we can say that this will be equals to negative 1.329 is equals to 3 minus mu divided by sigma, और rearrange करें, so this will be minus 1.329 is sigma plus mu is equals to 3. so this will be equation 2. now put equation 1 into put equation, or you can say simultaneously solve these two, simultaneously solve, and you will get the value of sigma. दो equations हैं और दो unknown variables हैं, so mu will be equals to, directly आप लिख सकते हैं mu will be equals to, डायरेक्टली नहीं लिखना, खैर आपने वर्किंग शो करनी है, बट आई होप के साइमल्टेनियसली अब इसको सॉल्व कर लेंगे. सो सिग्मा इज इक्वल्स टू 2.265. सो दीज टू विल बी द फाइनल आंसर. आई होप दैट इसका जो ट्रिकी पार्ट था वो हमने टेबल से डिस्कस कर लिया, और अब ये दो रह गए तो इसको साइमल्टेनियसली तो आप सॉल्व कर ही लेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next part, sorry. In a random sample of 200 leaves of this second type, how many would the scientists expect to find with length more than one standard deviation from the mean? Okay. In a random sample of 2000 leaves, in a random sample of 2000 leaves of this second type, how many would the scientists expect to find the length more than one standard deviation from the mean? Okay, this is an important point. So इसका मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं. So क्वेश्चन को अगर हम समझें, और क्वेश्चन की सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लेट मी ड्रॉ द लाइन अगेन. ओके, क्वेश्चन इज कि आपके पास ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन है. ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता है कि दिस लाइन, ये जो सेंट्रल लाइन होगी, दिस विल रिप्रेजेंट द मीन. अब वन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, सो इसका मतलब ये है कि म्यू माइनस सिग्मा एंड देन म्यू प्लस सिग्मा. नाउ हाउ मेनी वुड द साइंटिस्ट एक्सपेक्ट टू फाइंड द लेंथ मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन? सो मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स के मीन से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन अप और स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन दोनों का आपने कैलकुलेट करना है. सो विच मीन्स दैट आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज ये सारा एरिया
एंड देन ये सारा एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया है। नाउ इसको हम वन बाय वन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस साइड को फाइंड करेंगे एंड देन हम सेकेंड साइड को अलग से फाइंड करेंगे। नाउ इस साइड को अगर आप देखें सो दिस विल बी z माइनस z इज इक्वल, z की वैल्यूज फाइंड करें। सो x आपके पास क्या है, x इज इन फॉर दिस केस x इज म्यू माइनस सिग्मा है। देन माइनस सिग्मा ये फॉर्मूला क्या है, बिकॉज हमें पता है कि z की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो डिवाइडेड बाय सिग्मा हेयर, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो z विल बी इक्वल्स टू -1 फॉर द फर्स्ट केस, z विल बी इक्वल्स टू -1। अब सेकंड केस में देखें, सेकंड केस के लिए अगेन देखें तो z विल बी इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू divided by sigma. So z will be equals to 1 for the second case. I hope that the concept is clear. Now we have to find the probabilities between z is equals to 1 and z is equals to -1. So this will be probability of z less than 1 minus probability of z greater than -1, ये हमने फाइंड करनी है। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 माइनस, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, दिस शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1। तो ये हम टेबल से फाइंड करेंगे। z लेस देन 1 विल बी इक्वल्स टू, अब 1 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, आपके पास 1 आपके पास .8413, सो 1 आपके पास बन रहा है 0.8413। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ओके नाउ वी कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट दिस विल बी इक्वल्स टू 0.8413 minus 1 minus probability of z less than -1। तो z less than -1 के लिए सो ये हमें पता है कि 1 की probability को ही लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल 0.8413 अगेन। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें सो योर आंसर विल बी 0.6826। नाउ this is the probability between z is equals to 1 and -1, between 1 and -1। तो ये हमारे पास इन दोनों की probability आ गई कि इन दोनों के दरमियान की probability हमारे पास आ गई। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें इस shaded region की probability चाहिए। सो इसके लिए what we will do, we will simply subtract it। so probability of greater than 1 standard deviation will be equals to 1 minus 0.6826। so इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी 0.373174। अब हमने, आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। हाउ मेनी वुड द साइंटिस्ट एक्सपेक्ट टू फाइंड दिस लेंथ? दिस लेंथ मीन्स 200,000 लीव्स। सो 2000 लीव्स का मतलब ये है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2000 leaves will be equals to
2000 into 0.3174, so 2000 into 0.3174, it will gives us 634.8. 634.8. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. और इसमें ये जो टेबल से वैल्यूज निकालनी है ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, हम दोबारा भी इसको किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Now let's move on to the next question, question number 6. Now Janice is playing a computer game. She has to complete level 1 and level 2. Level 1 and level 2. To finish the game, she is allowed to at most 2 attempts at any level. Okay, for level 1 the probability of the Janice complete it at the first attempt is 0.6. If she fails at her first attempt, the probability that she complete it at the second attempt is 0.3. If Janice complete level 1, she immediately moves on to level 2. Okay, fine. For level 2, okay, एक गेम है हमारे पास इसमें जिसकी लेवल 1 और लेवल 2 है, और अगर उसको फिनिश करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज हमने गिवन है कि लेवल 1 को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने की ये प्रोबेबिलिटी है, सेकंड में क्लियर करने की ये प्रोबेबिलिटी है, और अगर लेवल 1 क्लियर होता है तो लेवल 2 की तरफ तब ही मूव करेंगे. नाउ शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट Janice मूव्स ऑन टू लेवल 2 इज 0.72. तो सबसे पहले तो हम इसकी एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज लेवल 1. लेवल 1 के लिए अगर हम बनाएं, सो विन एंड लूज. सो विन की प्रोबेबिलिटी लेवल 1 में क्या है, दैट इज 0. ओके, लूज अगर कर रहा है तो लेवल 1 को ही दोबारा खेलेगा, अगर विन कर रहा है तो लेवल 2 पे मूव कर जाएगा. अगर ये गेम विन कर चुका है लेवल 1 से, तो ये लेवल 2 पे मूव कर जाएगा. अदरवाइज लेवल 1 में लूज किया है तो ये दोबारा गेम खेलेगा, अगर लूज कर गया तो आउट, अगर विन कर गया तो लेवल 2 पे मूव कर जाएगा. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. देन लेवल 2 पे आ जाए. लेवल 2, सो लेवल 2 पे भी अगेन लेवल 2 पे आने के बाद अगर विन कर गया तो गेम फिनिश हो जाएगी, अगर लूज कर गया तो दोबारा ये अटेम्प्ट करेगा. विन कर गया तो फिनिश, और लूज कर गया तो आउट हो जाएगा. अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं यहाँ पे. लेवल 1 में विन की प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 0.6 फर्स्ट अटेम्प्ट में, और लूज की थी 0.4. लेवल 1 में लूज की विन की प्रोबेबिलिटी सेकेंड अटेम्प्ट में क्या है 0.3, और लूज की क्या होगी 0.7. सिमिलरली लेवल 2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में विन की प्रोबेबिलिटी 0.4, दिस वन इज 0.6, और सेकेंड अटेम्प्ट में 0.2 एंड 0.8. नाउ probability of J moves to level 2. probability of J moves to level 2, इसका मतलब ये है probability of J moves to level 2. So this will be equals to, अब हम देखते हैं लेवल 2 पे कब का मूव कर रहा है. एक आपके पास 0.6 पे मूव कर रहा है डायरेक्टली, 0.6 प्लस इस पाथ, अब ये फर्स्ट पाथ पे मूव कर रहा था, ये इस पाथ से लेवल 2 पे मूव कर रहा था, और दूसरा इस पाथ से भी लेवल 2 पे मूव कर रहा है. तो दिस विल बी 0.4 into 0.3. सो द फाइनल आंसर विल बी 0.4 into 0.3 plus 0.6. So the answer will be 0.72 hence proved. So this will be the final answer. ट्री डायग्राम से ये है कि आपके सोल्यूशन में मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है.
Now find the probability that Janice finishes the game. Okay, now finishes the game. अब देखिए probability आपको second part में भी help out कर रही है. So probability of finish the game. अब गेम फिनिश कब होगी? गेम फिनिश दो केसेस में होगा, जब आप लेवल 1 पे भी विन करें और लेवल 2 पे भी विन करें. सो आपको ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल 1 पे भी विन, सेकंड पे भी विन, प्लस या ये हो सकता है कि फर्स्ट पे आपने लूज़ किया हो, देन आपने विन किया हो लेवल 1 पे, और लेवल 2 पे डायरेक्टली जाके विन कर गए हो. थर्ड ये है आपके पास कि आपने लेवल 1 पे पहले लूज़ किया हो, फिर विन कर गए हो, और लेवल 2 पे भी आप पहले लूज़ कर गए हो और फिर विन कर गए हो. तो ये तीन ही केसेस हैं. और थर्ड ये हो सकता है, हाँ थर्ड ये भी हो सकता है, फोर्थ, कि फर्स्ट में आपने लेवल 1 पे ही विन कर लिया हो फर्स्ट अटैम्प्ट पे, और लेवल 2 पे आपने पहले लूज़ किया हो और फिर विन किया हो. तो ये चार केसेस हैं आपके पास, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी ऊपर गिवन है. सो फर्स्ट में देखें, लेवल 1 पे फर्स्ट अटैम्प्ट में विन का मतलब है 0.6 इंटू 0.4, लेवल 2 में फर्स्ट अटैम्प्ट पे विन की, प्लस देन लूज इंटू विन 0.4 इंटू 0.3, और फिर आप सेकंड में विन कर गए हो तो 0.4, देन 0.4 इंटू 0.3 इंटू, अब सेकंड में भी आप लूज और विन कर रहे हैं तो 0.6 इंटू 0.2. लास्ट केस देखें, so this will be win and lose. So 0.6 into second level 2 में आप lose कर रहे हैं 0.6 into 0.2. तो इस सब को अगर आप solve करेंगे so your final answer will be, अच्छा इसमें वर्किंग आपने सारी कर रही हैं. मतलब ये है कि जब आप इसको 1 by 1 ऐड करना है, like probability of finish द गेम, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने वर्किंग अपनी सारी करनी है. तो 0.6 इंटू 0.4 करें, 0.6 इंटू 0.4, तो दिस विल बी 0.24 प्लस 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.048 प्लस नेक्स्ट पे भी जाएं, सो दिस विल बी 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.2, so this will be equals to 0.0144, then again last one 0.6 multiply by 0.6 multiply by 0.2, so this will be equals to plus 0.072, so plus 0.0144 plus 0.048 plus 0.24, so this complete will be equals to 0.3744. So probability of finish the game will be equal to 0.3744, correct to 3 decimal place. So yeah, 3 significant figures. So probability of finish the game will be equal to 0.374. I hope that the concept is clear. So this will be the final answer for part B. Now let's move on to the next part. Find the probability that Janice fails exactly one attempt. So Janice fails exactly one attempt, given that, okay, now given that means that this statement, this wording, this keyword means that this is, we have to apply the conditional probability.
ओके, कीवर्ड्स को अगर आपने माइंड में रखा तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। सो फेल्स एग्जैक्टली वन, लेट्स सपोज हम इसको दोनों को थोड़ा सा एग्जैक्टली, फेल्स एग्जैक्टली वन अटेम्प्ट, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड फिनिशेस द गेम को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्टेटमेंट ये गिवन दैट, इससे आप कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं रीराइट कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स फिनिशेस द गेम, फिनिशेस द गेम हम पार्ट बी के अंदर फाइंड कर चुके हैं, तो ये दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पार्ट बी में फाइंड कर चुके हैं। बी मीन्स फिनिशेस द गेम, ए मीन्स एग्जैक्टली वन अटैम्प्ट। सो एग्जैक्टली वन अटैम्प्ट को हम देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू, अब एग्जैक्टली वन अटैम्प्ट पे आ जाए। सो ट्री डायग्राम पे अगर आप आए तो एग्जैक्टली वन अटैम्प्ट का मतलब ये है कि विन लूज विन, ओके, विन फेल्स एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक दफ़ा फेल हो रहा है। सो लूज विन, विन भी हो सकता है और विन विन लूज भी हो सकता है, विन लूज विन भी हो सकता है। सो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एग्जैक्टली वन के फेल्स का मतलब क्या है, फेल्स एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन लूज विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज विन विन, ओके, एंड देन ये दो केसेस बनते हैं। इसके अलावा फेल्स एग्जैक्टली वन इसमें नहीं, लूज मीन्स के फेल वन हो रहा है, डिवाइडेड बाय, ये हम प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 0.374, ये सेकेंड पार्ट में हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब विन लूज विन की प्रोबेबिलिटी देखें, अगेन ट्री डायग्राम से ही हेल्प लेंगे। सो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.2, तो ये पाथ बन रहा है विन लूज विन। सो दिस विल बी 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.2 प्लस लूज विन विन। तो लेवल वन पे आप लूज करने तो 0.4 इंटू 0.3 ये पाथ, 0.3 इंटू 0.4। सो ये आपके पास क्या बनता है 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.4 होल इज डिवाइडेड बाय 0.374। मैं आपको ये तो रिकमेंड, चले हम वन बाय वन ही कर लेते हैं। सो दिस विल बी 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.3 into 0.4. So this will be equals to 0.12 divided by 0.374. So your final answer of probability of A given that probability of B will be equals to, so divided by 0.374. So this will be 0.3208. So 0.3208. So इसको हम करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस करें, so 0.321. So this will be the final answer for part C. Okay, I think that is it for today. So today we have discussed the paper May-June 2022 paper 51 और इसके हमने क्वेश्चन नंबर
4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आपने कोई लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।